Assalamu alaikum. Welcome to Educare. Our next topic is national insurance contribution. So, national insurance contribution is a tax imposed on employer, employee, and self-employed person. What are the rate of tax? What are the classes of contribution, basis of assessment, and who has to pay that tax? First, we'll think that क्लास ऑफ कंट्रीब्यूशन अगर हम क्लास 1 एम्प्लॉई की बात करें तो बेसिस ऑफ असेसमेंट इसकी ये है कि अगर एम्प्लॉई की अर्निंग 12,570 से ज़्यादा है तो ये एम्प्लॉई को ही पे करना पड़ता है, उसी की सैलरी से डिडक्ट होता है। रेट इसका ये है कि इफ़ द इनकम इज़ बिटवीन 50,270 एंड 12,570, सो मीन्स जितनी इसकी इनकम 12,570 से ग्रेटर है एंड अप टू 50,270 है उस पर 13.25%, and if its income is greater than 50,270 then excess portion will be calculated on 3.25%, only excess portion. Like अगर 60,000 इनकम है इसकी तो फर्स्ट हम कंसिडर करेंगे डिफरेंस ऑफ 50,270 और 12,570, उसका 13.25% उसकी कंट्रीब्यूशन होगी। और जितना पोर्शन एक्सेस है 50,270 से यानी डिफरेंस ऑफ 60,000 एंड 50,270 उस पर 3.25% का टैक्स कंट्रीब्यूट किया जाएगा। क्लास 1 एम्प्लॉयर के हवाले से अगर एम्प्लॉई की अर्निंग 9100 से ज़्यादा है दैन द एम्प्लॉयर इज़ लायबल टू पे, एम्प्लॉयर ने पे करना है और ये उस अर्निंग पे किया जाएगा जो कि 9100 से ज़्यादा है और ये फ्लैट 15.05% है, इसमें कोई और लिमिट नहीं है। मीन्स वट एवर द इनकम ऑफ एम्प्लॉई इज़ इन एक्सेस ऑफ 9100 यू हैव टू कैलकुलेट दैट। लाइक अगर 40,000 इनकम है उसकी तो उसकी कितनी इनकम 9100 से ज़्यादा है, दैट इज़ 38,900, तो उस पर डायरेक्टली 15.05% टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। क्लास 1 है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल बेनिफिट, जो भी टैक्सेबल बेनिफिट प्रोवाइड किए गए एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को उस पर ये एम्प्लॉयर ने पे करना है और ये डायरेक्टली टैक्सेबल बेनिफिट की वैल्यू का 15.05% होगा। क्लास 2 टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 12,570, दिस इज़ अबाउट टैक्स टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, लेकिन उस वक्त उसका प्रॉफिट 12,570 से ज़्यादा हो। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को पे करना है और रेट इसका है 3.15 पर वीक, सो पूरे साल का अगर आप काउंट करें तो इट विल बी 164। क्लास 4 भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को टैक्स पे करना होता है इसी सूरत में कि अगर उसका टैक्सेबल प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 12,570 है तो उसके लिए भी लिमिट है कि इनकम इन एक्सेस ऑफ 12,570 बट अप टू 50,270 इस पे रेट है 10.25 और इनकम जितनी उसकी 50,270 से एक्सेस है ज़्यादा है उस पर 3.25%। सो दीज आर द रेट ऑफ टैक्स। क्लास 1 NIC said to be any remuneration derived from employment paid in cash or asset that is readily convertible into cash. इस कैलकुलेशन इज़ बेस्ड ऑन ग्रॉस अर्निंग, तो याद रखना है कि इसकी कैलकुलेशन ग्रॉस अर्निंग पे बेस करती है with no allowable deduction. It is payable if an individual is employed in UK. क्लास 1 एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन कब से स्टार्ट की जाती है पेमेंट करनी इसकी, व्हेन द एम्प्लॉई इज़ अ एज ऑफ 16 टू द स्टेट पेंशन एज। क्लास 1 एम्प्लॉयर 16 टू द डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट सीज्ड, क्लास 1 एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन उस वक्त तक करनी है जो कि एज उसकी स्टार्ट हो रही है 16 से और उस डेट तक जब तक कि वो एम्प्लॉई रहा है। क्लास 1 है पेबल बाय 19/7/23 और कंप्यूटराइज की सूरत में 22/7/23 फॉर द टैक्स ईयर 22-23। क्लास 2 में अगेन एज जिस एज में कंट्रीब्यूशन करनी है वो 16 टू स्टेट पेंशन एज है। डेट ऑफ पेमेंट 31 जनवरी फॉलोइंग द एंड ऑफ टैक्स ईयर, यानी अगर आपका टैक्स ईयर एंड हो रहा है 5 अप्रैल 23 को तो इसकी डेट 31 जनवरी 24 होगी। क्लास 4 अगेन 16 टू स्टेट पेंशन एज, दिस इज़ द ब्रैकेट एज ब्रैकेट की जिसमें से ये कंट्रीब्यूशन करनी है सेम टाइम एज इंडिविजुअल इनकम टैक्स पेमेंट। प्रॉफिट टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट दैट आर सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स आफ्टर डिडक्टिंग लॉसेस दैट इज़ कंसिडर्ड एज प्रॉफिट, यानी क्लास 2 और 4 के लिए हमें ये तय करना है कि क्या अमाउंट है प्रॉफिट की, तो बताया जा रहा है कि टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट जिस पे इनकम टैक्स इम्पोज किया जाता है आफ्टर डिडक्टिंग लॉसेस। Now a simple question, and he is an employee of PQ or PLC, he is paid 5,000 per month. तो यहाँ पे हम कंसिडर ये करेंगे कि अगर इसकी मंथली इनकम 5,000 है तो एनुअल इनकम बनती है 60,000, 5,000 इंटू 12, एज इज़ एम्प्लॉई तो हमारे पास इसके हवाले से 2
NIC कंट्रीब्यूशन आती हैं फर्स्ट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो कि आपके पास 13.25 और 3.25% के रेट पे है। मीन्स फॉर इनकम बिटवीन 50,270 माइनस 12,570, इस पे कंट्रीब्यूशन आएगी 13.25%, एंड इनकम अबव 50,270 बट अप टू 60,000, इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा 3.25%. सो इट विल बी 50,270 minus 12,570 and 13.25% of this will be 4,995. And for above amount, 60,000 minus 50,270 multiplied by 325%, this is 316. So this is the first employee contribution, employee class 1 contribution. Then employer class 1 contribution is calculated. जिसके लिए हमें सिर्फ ये देखना है कि कितनी इनकम उसकी 9100 से ग्रेटर है. एज पर दिस रूल 15.05 of all earning above 9100. So it will be 60,000 minus 9100 is equal and multiplied by 15.05%. So this will be 7660. सो ये रूल हमने जो ऊपर देखे थे कंट्रीब्यूशन के वो अप्लाई किए. दिस विल बी इन टोटल 5,031. Now next question, ABC Limited has two employees for several years. One is earning 40,000 per annum and the other earning 18,000 per annum. But before solving this question, हमें कुछ और चीज़ें कंसिडर करनी हैं. First of all, about gross earning. What is to be included in gross earning? It is wages, salaries, bonus, commission, overtime payment, sick pay, tips and gratuity allocated by employer, private expenses reimbursed, cash or non-cash voucher, mileage allowance received or approved 45 penny per each mile. Remember that in national insurance contribution case, what amount to be included in gross earning? That is the excess benefit over and above the approved mileage allowance. तो यहाँ पे अप्रूव माइलेज अलाउंस का रेट जो है वो 45 पेनीज़ ही रहता है. इट इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू 25 पेनीज़ फॉर ओवर 10,000 माइलेज. मतलब नॉर्मल आपके पास अप्रूव माइलेज अलाउंस का रेट ये था कि फर्स्ट 10,000 माइल्स के लिए 45 पेनी और नेक्स्ट आपके पास ओवर 10,000 माइल्स के लिए 25 पेनीज़. लेकिन यहाँ पे आपने इस रूल को कंसिडर नहीं करना कि 10,000 माइल से अबव आपके पास रेट चेंज हो जाएगा. आपने ये देखना है कि एट एवरी केस, इन एवरी केस, अगर आपके पास इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है 10,000 माइल से, तब भी 45 पेनीज़ का ही रेट अप्लाई होगा. सो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को 45 पेनी से ज़्यादा पे किया तो ये एक्सेस बेनिफिट कंसिडर किया जाएगा और ग्रॉस अर्निंग में इंक्लूड होगा. लाइक फॉर एग्जांपल, एक पर्सन ने 15,000 माइल्स ट्रैवल किया. In that case, he is entitled to receive 15,000 into 45 pennies, whatever amount it is. This will be his entitlement. But अगर उसका एम्प्लॉयर उसे 50 pennies पर माइल दे रहा है तो ये जो एक्सेस 5 pennies पर माइल उसे मिल रहे हैं, ये उसके टैक्सेबल बेनिफिट में ग्रॉस अर्निंग में इंक्लूड होंगे. एग्जाम बेनिफिट में आ जाते हैं बिजनेस पर्पस एक्सपेंस, टिप्स डायरेक्टली जो रिसीव किए हैं कस्टमर से, डिविडेंड जो कि जिस पे NIC नहीं लगता, दे आर पेड टू डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ सैलरी. Apart from this, NIC employment allowance भी allow है. Employers are able to claim up to 5,000 relief per annum from their class 1 employer payment. So, employer ने जितनी भी contribution करनी है अपने employees के हवाले से, इस पे से 5,000 का allowance मिल जाता है. It is claimed through RTA system, real time system, information system.
नॉट अवेलेबल वे डायरेक्टर इज सोल एम्प्लॉय एंड पेड ओवर 9100। उस सूरत में कि डायरेक्टर सोल एम्प्लॉय है और उसे 9100 से ज़्यादा पे किया जा रहा है, उस सूरत में ये अवेलेबल नहीं है। इज़ ओनली अवेलेबल टू एम्प्लॉयर विद टोटल क्लास 1 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेस दैन 1 लाख इन प्रीवियस ईयर। तो अगर उसकी पिछले साल की कंट्रीब्यूशन 1 लाख से कम है तब ये 5000 का अलाउंस उसे अवेलेबल है। इस क्वेश्चन में हमने एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि एम्प्लॉयर को इस एम्प्लॉय के लिहाज से यानी ABC लिमिटेड को अपने एम्प्लॉयज़ के लिहाज से कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट एम्प्लॉयर हैज़ टू कंट्रीब्यूट एज NIC class 1 contribution. So in case of employee 1, it is and in case of employee 2, his salary is only 18,000. So whatever amount is in excess of 9100, 15.505% of this, and these are as per this rule, 15.05% on all earning above 9100. So 40,000 minus 9100 multiplied by this is 4650. Then for employee 2, this is 1339. So total contribution इसकी आ गई 5989. But as we have to consider from the point of view of employer, an employer has been allowed a allowance of 5000. तो अगर employment allowance हम 5000 लेस कर दें, ये क्या है employment allowance. So remaining is the contribution that the employee has to make, and that is only 989. Right, we have to calculate whatever amount has been received by the employee. On the basis of this, what amount should be contributed by employer for this employee. So उसके लिए रूल ये है कि अगर एम्प्लॉई की इनकम 9100 से ज़्यादा है तो जितनी उसकी इनकम 9100 से ज़्यादा है उस पर 15.05% एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे एम्प्लॉयर ABC लिमिटेड है, सो दे हैव टू कंट्रीब्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट एम्प्लॉई 40,000 minus 9100 into 15.05%, and for second employee 18,000 minus 9100 into 15.05%. So ये अमाउंट बनी 5989, बट वी हैव टू कंसिडर दैट एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस अलाउ फॉर एम्प्लॉयर। सो हमने वो एम्प्लॉयमेंट अलाउंस अलाउ किया, तो रिमेनिंग अमाउंट जो पे करनी है एम्प्लॉयर ने ABC लिमिटेड ने वो 989 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशरफ इज़ अ ट्रेडर, हैज़ अ ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ 18,000 फॉर 22-23. एज ही इज़ अ ट्रेडर इट मीन्स ही इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को क्लास 2 और क्लास 4 की कंट्रीब्यूशन करनी होती है। सो द रेट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड इज़ 3.15 per week, and in the case of self employed class 4 contribution, the contribution in excess of 12,570 but up to 50,270, it is a rate of 10.25%. So for class 2 contribution it is 3.15 into 52, and this is approximately 164. And for class 4 contribution of self-employed, we have to consider whatever is the difference of 18,000 and 12,570. It will be contributed at the rate of 10.25%. So this will be 557. So this is the total. So this is the total contribution as a self-employed person he has to make. Now for example, if his trading profit is for 55,000, then what we have to do? अशरफ इज़ अ ट्रेडर, अगर उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट 55,000 है तो फिर हमने कैसे कंट्रीब्यूशन करनी है। क्लास 2 कंट्रीब्यूशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन क्लास 4 कंट्रीब्यूशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इट इज़ 50,270 माइनस 12,570
इस डिफरेंस पे आपने कैलकुलेशन करनी है 10.25% और जितनी इनकम उसकी ज़्यादा है 55,000 से उस पे क्या रेट है 3.25%. So this is the contribution to be made. So it will be 50,270 minus 12,570 at the rate of 1025. This will be 3864. And in case of amount in excess of this, 55,000 minus 50,270 multiplied by 325%. So this will be 154. So in that case कि अगर उसकी इनकम 50,270 से ज़्यादा हो जाती है तो हमें कैलकुलेशन ऐसे करनी पड़ेगी. Next question, Kate is a trader. Her tax adjusted trading profit is 90,000. 6 employees are working for her. One has annual salary of 20,000 while other 5 are earning 5,000 per annum. तो यहाँ पे हमने उसकी कैलकुलेशन एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी करनी है, एज अ एम्प्लॉयर भी करनी है और ऑल टाइप ऑफ जो कंट्रीब्यूशन हम की जा सकती है वो सारी हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है. सो फर्स्ट वी कंसिडर दैट उसका एक एम्प्लॉई है, 6 एम्प्लॉइज़ हैं जिसमें से एक एम्प्लॉई की एनुअल सैलरी 20,000 है. सो इस सूरत में हम सबसे पहली कंट्रीब्यूशन देखते हैं क्लास 1 एम्प्लॉई दैट इज़ लायबल बाय एम्प्लॉई बट फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर. सो इसका रेट के मुताबिक कैलकुलेशन करते हैं. So it will be class 1 employee 20,000 minus 12,570 at the rate of 13.25%. So this is first contribution. Your all type of contribution इसमें हमने कंसिडर करनी है इस क्वेश्चन में. तो ये हमने कंसिडर की क्लास 1 एम्प्लॉई जिसका रेट है 13.25%, उस इनकम पे जो 12,570 से ज़्यादा है. सो अकॉर्डिंग टू दैट द अमाउंट वुड बी दिस इज़ 984. सेकेंड हमने कैलकुलेशन करनी है इसकी क्लास 1 एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉयर के लिए रेट याद होने चाहिए. These are 15.05% on all earning above 9,100. So this will be 20,000 minus 9,100 multiplied by 1640 is the contribution for class 1 एम्प्लॉयर. अच्छा, इस क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कोई बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है गेट को, दैट इज़ वाई क्लास 1 ए की कंट्रीब्यूशन नहीं होगी. देन आ जाती है आपके पास क्लास 2 सेल्फ एम्प्लॉयड की कंट्रीब्यूशन जिसके लिए रेट आपके पास फिक्स है एंड दैट इज़ 3.15 into 52. So this will be 164. And in case of class 4 contribution of self-employed, the rates are given to you as 10.25%. So we have to consider this. Whatever amount of income is in excess of 12,570, it will be paid at the rate of 10.25%. So it will be minus multiplied by 1025. So this will be 762. So these are the different contribution in this question. Now this is a full length question. Larry is employed by ABC Limited. He pays into occupational pension scheme. His remuneration for the year ended 22-23 is as follows. Salary 30,000, bonus 3,000, employees contribution 2,000, employers contribution is also 2,000, voucher for local gym, private use of an asset, and also he is provided with company car list price 20,000 throughout the year. The CO2 emission is 128 grams per kilometer.
Fuel is also provided by the company. The company also provided a mobile phone, cost 150. So as he is an employee person, we have to consider the class 1 and class 1A benefits. First we have to calculate what is the gross salary of that person. The gross salary will include 30,000 salary, bonus 3,000 and voucher for local gym. Remember, employee's contribution is not deductible for NIC purpose and employer's contribution is exempt. So that is why these three amounts should be included. So gross salary of this person would be for the class 1A purpose is 34,000. How it is calculated? 30,000 of salary, 3,000 of bonus and 1,000 of gym. So on this we have to calculate the contribution for employees contribution class 1A, class 1 in fact, this is 34,000 minus 12,570 and 13.25% of this will be contributed. So this will be difference of 34,000 minus 12,570 multiplied by 0.1325. So it is 2839. And if you consider the class 1 employer's contribution, so it has a rule that income above 9,100 will be taxed at the rate of 15.05%. So this will be 34,000 minus 9,100 multiplied by 15.05%. This will be 3747. Now we have to consider what are the taxable benefit. So he has been provided a car with a list price of 20,000, CO2 emission is 128. So what we have to consider? We have to calculate the rate, the appropriate percentage. So appropriate percentage, we write down the CO2 emission to 125 gram per kilometer, then divide by 5 minus 55 divided by 5, this will give you percentage of 14. So it will be total 30%. Remember that for 55 gram CO2 emission the percentage is 16, and for above every 5 gram percentage 1% appropriate will be added. So it is 30%, that is the consider the appropriate percentage. So cost of car is 20,000 and 30% of this would be 6,000. And also for the fuel benefit, this is the car benefit. Fuel benefit, we have to consider the benchmark rate of 25,300 multiplied by 30%, and this will be 25,300 multiplied by 30%, this will be 7,590. And plus one more benefit is mentioned here, and that is about private use of an asset, that is 2,500. Private use of an asset is 2,500. So total it will be 09016. Remember that one mobile benefit is exempt benefit, so it will not be included. Now for class 1A contribution, if we consider the chart, for class 1A contribution it is 15.05 for all taxable benefit. So it is 16,090 into 15.05%. So this is the benefit to be included in case of class 16,090. So this is 2421. Class 1A contribution require 2421. Right, this is the calculation of class 1A contribution for taxable benefit. Another simple question: James is self-employed trader and prepare accounts through 31st March each year. His tax adjusted trading profit is 60,000 for the tax year ended 31st March 23. So simply we have to calculate his class 2 contribution.
Class 2 contribution is 3.15 per week. For 52 week it is 164, and for class 4 contribution we have to consider the bracket of difference of 50,270 minus 12,570 at the rate of 10.25%. This is 10.25% for class 4. And for the above income, it is 60,000 minus 50,270 into 3.25%. So this will be his contribution. If you calculate this, it will be 50,270 minus 12,570. It is 50,270 minus 12,570 and 3864. While in second case, this is 316. So total amount would be 4180. So that is about national insurance contribution.